Hello students, a very good evening to all of you. As discussed, today I am going to start with the Tudor royal dynasty. The Tudor royal dynasty, because they are all royal people, so it is basically known as the Tudor dynasty. And this dynasty is from the time 1485 to 1603. This is the time frame. And what happened, I will just give you the gist of the Tudor dynasty. After the defeat of Richard III at the Battle of Bosworth in 1485, the reign of Henry VII, who ruled from 1485 to 1509, effectively brought an end to the bitter and the bloody divisions between two houses. And what are those two houses? Yesterday I had told you the houses of York and the houses of Lancaster. Yes, he was successful in restoring the power and the stability of the English monarchy after the period of upheavals of the civil wars known as the War of the Roses. And Henry VIII succeeded the throne after his father's death. Henry VII की death हुई and he succeeded the throne. उसका लड़का था Henry VIII. And the reign of the second Tudor monarch, that is 1509 to 1547, what it gave, it was quite different. It ushered in a quite different political experience, characterized by a much more pleasure-loving court culture, more belligerent foreign policies and religious ferments, particularly in the later years. आगे के समय में थोड़ा सा और आगे. While this handsome 17-year-old boy, who was handsome also, that is Henry VIII, acceded to the throne, he was ambitious to mark his mark on the European stage. How? As a chivalric prince and as a military commander too. And his sexual career, which spanned with 6 wives, and apart from 6 wives, he had several other mistresses, which attracted and perplexed the minds of the European courts during his lifetime. And his devotion to hunting, his devotion to feasting, lovemaking meant that he left much of the political work to whom? To his advisors. जब हम काम नहीं करेंगे और हम इन चीजों में engage रहेंगे, तो who will ultimately work? The advisors, and who wielded a lot of enormous political power. And because of these reasons, Henry VIII has been described as one of the most charismatic rulers to sit on English throne. His struggle with Rome led to the separation of Church of England, जो बहुत बड़ी बात हो गई थी, from the papal authority. ये क्वेश्चन भी पेपर 3 में इस तरह से आता था, बहुत घुमा फिरा करके they used to give the option that who was the ruler जिसने ऐसा ऐसा किया था. तो जब तक आपको minute details नहीं पता है, you are not be able to get these from the books if you don't listen it properly. So what happened that his struggle with Rome, जब रोम के साथ इसका struggle हुआ, उससे क्या हुआ? It led to the separation of Church of England from which place? From the papal authority. The dissolution of monasteries and his own establishment. हमने खुद establish कर लिया एडवर्ड VIII ने. As how? कैसे establish किया? How he established himself? Established as the supreme head of the Church of England. यही वो चाहता था, that he wanted to become the supreme head of the Church of England. And he was succeeded by his son, ये देखिए, Edward VI. He was succeeded by his son Edward VI. After this, you can say his reign means he ruled from 1547 to 1553, and his reign was dominated by much more vigorous engagement with the Protestant doctrine, and was
you can say had a lot of facing economic problems, and जब वहां economic problems होती हैं वहां पे social unrest भी हो जाता है. And after Edward VI death, इसकी डेथ होने के बाद इसकी हाफ सिस्टर थी मेरी. Because why half sister? Because he had so many queens, so many wives. Half sister Queen Mary I, she ascended the throne, and the reign of Queen Mary from 1553 to 1558 heralded a radical political religious changes in her kingdom, and her mission was to bring back England to the Catholic field. यहां से ध्यान दीजिएगा कि कितने चेंजेस टर्मोइल्स आने वाले हैं फ्रॉम इन द ट्यूडर डायनेस्टी. कि जब ये गद्दी पे आई तो इसने क्या चाहा? टू ब्रिंग इंग्लैंड टू द कैथोलिक फोल्ड. And to achieve this thing, this mission was in her mind. इस कैथोलिक फोल्ड को लाने के लिए उसने क्या किया? She married King Philip of Spain. किंग फिलिप ऑफ स्पेन से उसने शादी कर लिया 1554 में, 1554 में. And this marriage was not happy. A lot of resentment was there. A lot of persecution was there of the Protestant clergy in spite of that. And her opponents gave her the title Bloody Mary. You must be knowing about Bloody Mary. Who is Bloody Mary? She is no other than but Queen Mary. And her trust of the previous political elite, her failure to produce an heir, and the progressive onset of ill health ultimately contributed to Mary's inability to strengthen the power base of her support during her short reign. देखिए 5 साल का ही ये राज था और वो संभाल नहीं पाई. So when Queen Mary died in 1558, उसकी अगेन हाफ सिस्टर, लेकिन कैसी हाफ सिस्टर थी ये? प्रोटेस्टेंट हाफ सिस्टर एलिजाबेथ accepted the crown of an exhausted and weakened nation. पूरा नेशन जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका था, वीक हो चुका था, पैसे से खाली हो चुका था, पावर से खाली हो चुका था. And the reign of the last Tudor monarch is Elizabeth, that is 1558 to 1603, offered at least the prospect of conciliation and stability. कम से कम इतने सारे लोग में यहां पे प्रजा ने एक स्टेबिलिटी देखी इनकी पर्सनालिटी में, इनकी आंखों में, इनकी वर्कशॉप में, वर्कमैनशिप में, इनकी क्रिएटिविटी में और इनकी इनॉर्मस कनिंगनेस में. कनिंगनेस, क्लेवरनेस, नॉट इन द नेगेटिव सेंस बट इन अ पॉजिटिव सेंस. कि हम कैसे अपने देश को, अपनी प्रजा को एक नेशनल पेट्रियोटिक फर्वर से भरपूर कर दें, उनको रोटी, कपड़ा और मकान दे दें, जिससे कि सब खुश हो जाएं एंड दे कैन डू वेल, राइट वेल एंड एंजॉय वेल इन लाइफ. यही एक सही रूलर का फर्ज होना चाहिए जो जल्दी आपको नहीं मिलता है. सो दिस वॉज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट और द स्ट्रेटेजिक स्किल which she had, and she was only 24-25 years. एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 24-25 साल है, वो उस समय उसने बागडोर संभाली जिस समय सारे तरफ सिर्फ दुश्मन थे और उनके देश में कुछ भी नहीं था उनको संभालने के लिए. So it is an age of dreams, it is an age of adventure, it was an age of unbounded enthusiasm springing from the new lands of fabulous riches revealing by the English explorers. वो भी इसी समय में हुआ है. And this together triggered a creative impulse of people and gave us literature. वो लिटरेचर दिया जिसको हम आज कहते हैं एलिजाबेथन लिटरेचर, जिसको वर्ल्ड के कोने कोने तक में पढ़ा जाता है. And we cannot forget that what is Elizabethan literature, कि 20, 17, 20, 22 बड़े बड़े लोग जो पैदा हुए, जिनको क्वीन ने सपोर्ट किया, जिनके बिना हमारी लिटरेचर अधूरी है, वो सब कब पैदा हुए? इसी एज में, चाहे वो शेक्सपियर क्यों ना हो. So that is why it is known as the golden age of English literature, which still stands unsurpassed. इस एज को कोई भी इस एज के आगे कोई बढ़ नहीं सकता. Though this age was somehow guilty of some short-term thinking, some excessive caution
she actually proved to be very vigilant, very intelligent, very effective political leader who could support everybody when necessary. जब कोई जरूरत है तब उसको सपोर्ट उसका सपोर्ट आपको मिलता था in a more successful manner than any of her Tudor predecessors. जितने भी ट्यूडर प्रीडिसेसर्स थे, इन किसी से भी आप कोई हेल्प की संभावना मत रखिए, या इन्होंने दिया भी नहीं. सो द बेस्ट वॉज एलिजाबेथ. तो ये क्या था स्टूडेंट्स? अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था. स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग प्रॉपरली? All of you are in my class? Just message me so that I may be able to know that yes, all my students are in the class, because still I'm not able to know. Anyways, so now, what are the chief events of the Tudor dynasty? See, this age of Tudors occupies one of the most important place in the history of England. Why? Because it saw the fall and rise of many great rulers. इनका उतरना, इनका जाना, इनका आना, बड़े बड़े रूलर्स का इसने rise and fall देखा है. And it has also seen some of the remarkable moments and events in this period which is still known in the history of the world. And this period is also known, as I told you, the Golden Age. And some of the chief points I will discuss with you, which is coming to my mind, and you can even note it point wise so that you may be able to remember. First of all, see, this question is something which is asked in most of the interviews. What do you know about Elizabethan era? What do you know about Elizabeth? What do you know about the Tudors? How Tudors came, how they went, were they successful, were they not successful, how they ruled? So the answers are so easy now if you are listening to me. But for the students, it is not easy, because I have my 20 years of experience where the students are unable to give the correct answer and they just try here and there. So don't do this thing now. So what are the chief points and what are the chief events for which the Tudor period is known? The first, कि Tudor era में सबसे पहले हमने क्या witness किया? The upward swing of the monarchical tendency. जो monarchy है, मतलब जो राजा है, रानी है, उनका जो tendency थी वो upward swing में गई. मतलब monarchy की जो position थी, उनकी जो ruling थी, वो विटनेस किया हमने ट्यूडर डायनेस्टी में कि मोनार्की की पावर बढ़ गई थी. एंड द पावर ऑफ द क्राउन वाज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. अगर ये पावरफुल थे यहां पे, उससे ज्यादा पावरफुल ये हो गए, उससे ज्यादा पावरफुल ये हो गए. इट वाज अ कांस्टेंट इंक्रीज ऑफ द पावर, बट पावर ऑफ अ डिफरेंट टाइप, नॉट पावरफुल एज वाज क्वीन एलिजाबेथ. ओके students, I am able to see your messages now, and many more students who have not messaged me, they can also message me so that I may be able to see them here. So this is the first point where the Tudor dynasty saw the upward swing of the monarchical tendency and the power of the crown was constantly increasing day by day. And in Henry VIII's attitude, मतलब Henry VIII का जो parliament के प्रति attitude था वो worth noting था. The attitude of Henry VIII towards the parliament was worth noting episode of this period, which you can read in detail in some of your history books, which is not needed to be discussed here in detail. And one more typical feature of this Queen Elizabeth period was a kind of despotism. ये एक बहुत important word है English students के लिए. They were real despots. इसका लिटरेचर का मीनिंग भी आप मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ दिस इफ यू आर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट. किसी को कोई डाउट है तो जरूर देखिएगा इसका डिटेल, बिकॉज प्रॉपर एक्सप्लेन करने में माइट टेक. इट इज वेरी सिंपल. डेस्पॉट मीन्स, हु कैन टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेस्पॉट? एनीबडी कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ डेस्पॉट? That Queen Elizabeth's period or this period of Tudor dynasty, they were despotic rulers. इसका मतलब ये होता है कि वो अपने को ही सब कुछ समझते थे, that they are of real power.
इनके आगे सब बेकार है, इवन द पार्लियामेंट. And especially Elizabeth in the Tudor dynasty, she limited the sphere and the privileges of the legal restraints without actually violating the laws. इन्होंने क्या किया क्वीन एलिजाबेथ ने कि लॉस को बिना वायलेट किए बहुत सारे लीगल रेस्ट्रेंट्स को किया, बहुत सारे प्रिविलेजेस को इवेट किया, लेकिन ये देखते रहे कि कहीं जस्टिस और इनजस्टिस में फर्क ना आ जाए. एंड द अफेयर्स ऑफ द चर्च were now regulated through parliament, जो इससे पहले नहीं होता था. Because they were despotic rulers, so they did not wish to see that parliament हमारे सामने खड़ा हो, आंखें दिखा करके कि हम भी कुछ हैं. तो उन्होंने पार्लियामेंट को कभी बड़ा बनाना ही नहीं चाहा. But Queen Elizabeth regulated each and everything through the process of parliament, which should be the correct tarika area. Now, the Tudor dynasty also witnessed reformation. And what is reformation? It was actually a political movement. It was a political movement, and the reformation had a constitutional effect on the English institutions and public as well. Separation of the English church from the Roman church, ये आपने ट्यूडर डायनेस्टी में देखा, और उसका क्या इफेक्ट हुआ when the English church got separated from the Roman church. Now, again, in short, we will discuss the Tudor era and the beginning, which is called the beginning of the new era. Some students, suppose if they might have joined me few minutes after the class, they may listen this thing properly, because this is again a second repetition of not actually the same thing, but a different, but it incorporates the same things. See, I yesterday told you that the modern age in England begins from the 15th century, and after 1484, some changes took place which did not affect the history, but the European history story as a whole. And what are the factors which were responsible to bring Europe from medieval to the modern age? कौन से ऐसे factors थे जिसको ट्यूडर एज को हम कहते हैं beginning of a new era? पहला point है Renaissance. And this classical Renaissance of the 15th century and the 14th century was very intellectual, very aesthetic, and it is also known as a social movement. And so the Renaissance caused a profound change in every phases of life, phases of thought, and even day-to-day practice. And Renaissance was primarily considered to be a movement in individualism. Individualism is one of the most important words which you have to mention if you are speaking somewhere, taking your viva or teaching to students. Individualism, it is a primarily movement in individualism. Individual की बहुत वैल्यू थी. So पहला पॉइंट मैंने आपको बताया Renaissance. The second point is that in this period we saw the rise of the middle class. And why we saw the rise of the middle class? Due to industrialization, capitalist class, which resulted in the constant struggle between the two, rich and the middle class. तो निश्चित रूप से वो तो होना ही था. तो पहला पॉइंट आपका हो गया Renaissance, दूसरा हो गया rise of the middle class. The third point which comes here is the geographical discoveries. And this new Tudor dynasty, a new era, also is responsible for these new discoveries. Why? Because the European traders were aware of the fact that they can earn a lot of money if they start their trade with the East. उनको ये पता था कि बहुत पैसा वो कमा सकते हैं अगर वो अपना ट्रेड ईस्ट से शुरू करें. क्यों? क्योंकि ईस्ट जो था, it was rich in silk, it was rich in precious stones, it was rich in drugs, it was rich in spices, and the Turkish conquest closed the old trade route. टर्किश कॉन्क्वेस्ट हुआ था जिसके वजह से जो ओल्ड रास्ता था पहला उसको बंद कर दिया. तो क्या होगा? आदमी अपना दाना पानी पैसा तो नहीं बंद कर देगा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा. आपकी मान लीजिए एक जॉब चली जाती है तो आप घर थोड़ी बैठ जाएंगे,
You will again see new approaches, new things in the market. So यही चीज यहां पे भी हुई. This forced the European traders to discover a direct sea route को निकालने की कोशिश किया. And in 1492, Columbus discovered America, and in 1497, John Cabot discovered Newfoundland and Labrador. शायद आपको इसके बारे में पता है, नहीं मुझे नहीं पता, but you can write it down. 1497 में जॉन कैबट ने डिस्कवर किया न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर. और 1498 में किसने डिस्कवर किया था सी रूट टू इंडिया? हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, वास्को डी गामा. और एक इन्वेंशन और हुआ था जिसको हम साइंटिफिक इन्वेंशन भी कह सकते हैं और ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, और वो क्या था? आई विल जस्ट से डैश कंपस. Who will now fill the blanks here? Dash compass. उस कंपस का क्या नाम था जो डिस्कवर किया गया था, जिसको इन्वेंट किया गया था, जिसके वजह से हमारे को नेविगेशन करने में बहुत आराम मिला, एंड विच एक्चुअली प्रूव्ड वेरी यूजफुल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द फिल इन द ब्लैंक्स? जैसे ये मैंने लिखा डैश कंपस. सो कौन सा कंपस? Who is going to tell me? Samiksha? Samiksha, you have written, are you there, sir? Yes, I am very well here. I am teaching since 3:40, I think. I have started the class. You are here, Samiksha? Magnetic. Magnetic. It is not magnetic, it is mariner's compass. It is mariners, M-A-R-I-N-E-R-S, mariner's compass. This compass was discovered which helped the navigation and which proved very useful for trade and commerce. So ये 3 points हो गए. Now the fourth point which comes is scientific inventions. And what are these scientific inventions? The printing press, which I told you yesterday, and cheap printing brought knowledge within the reach of the people. जितनी ज्यादा प्रिंटिंग होगी उतना ज्यादा पैसा कम होगा, प्रिंटिंग हमारे तक पहुंच पाएगी, नॉलेज बढ़ पाएगी और जनरल पीपल तक पहुंच पाएगी. एंड साइंटिफिक इन्वेंशन में और क्या हुआ? द इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर विच हैड इट्स ग्रेट इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑन द मोड ऑफ वॉरफेयर. गन पाउडर बहुत बड़ी चीज है. इसी प्रकार से ये मैरिनर्स कंपास जो है वो साइंटिफिक इन्वेंशन के ही अंतर्गत आएगा, जिसने कि हेल्प किया हमको नेविगेशन के समय. ओके, so these were the details about the Tudor dynasty, and I have already given you the details here. The Tudor dynasty: Henry VII, Henry VIII, Edward VI, Mary I, and then Elizabeth I. Now we will talk about little bit detail about Henry VII. You can note it down also. 1485 to 1509. He was basically the last king of England to win the throne by defeating the Richard II, as I told you, in the Battle of Bosworth. Now, Henry VIII. We come to Henry VIII. इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है. Henry VIII is important for you to manage some of the details. That Henry VIII was known for marrying 6 wives, and he is also known for the separation of Church of England and from the Roman Catholic Church. And I told you already that he is considered to be one of the most charismatic rulers to sit on the English throne. One thing more which I am forgetting here, which I immediately remember now to tell you, that he was a person who had all the literary minds, and he was also a very good poet and a very good flute player. Henry VIII was a very good flute player. He was a very ambitious ruler, and he desired to make England a very leading power. So he tried to restrict the power of France. हम बड़े कब होंगे? जब हम अपने दुश्मन के पावर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तभी तो होंगे. So he tried to restrict the power of France, and he wanted to dominate. He wanted to dominate the growing politics of all over Europe. And for this, he joined Holy League. HOLYLEAGUE. He joined Holy League. और ये होली लीग किसने बनाया था? He was formed by Pope.
It was formed by Pope, King of Spain, and the German Emperor. And at the request of Cardinal Wolsey, Wolsey, at the request of Cardinal Wolsey, Henry VIII ने ज्वाइन किया इस होली लीग को. And the second reason to join this league was the war with France. जो फ्रांस से लड़ाई चल रही थी उसका भी वही रीजन था कि उसने होली लीग को भी ज्वाइन कर लिया. एंड हेनरी एट वांटेड टू टेक बैक द प्रोविंस ऑफ गैसगोइन. आपको याद होगा कि मैंने आपको गैसगोइन बताया था 2 दिन पहले कि जहां पे इंग्लिश आर्मी थी जिसको हटाना चाहते थे, एंड जिसके वजह से ही अटैक्ड फ्रांस. एंड द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड at some place in 1513, and this battle where this French army was defeated is known as the Battle of Sprus. Battle of Sprus, S-P-R-U-S. It is known as the Battle of Sprus. And Henry VIII also invaded on Scotland to unite Scotland and England. And finally, he was succeeded by Edward VI, which I have already told you. Just note it down. Just 30 seconds. I'll take break. 30 seconds. Yes. To continue, now my next heading is to explain you what is Reformation. What is Reformation? Samiksha, you are not able to watch. What should be done now? Samiksha. Yes. So we were talking about Reformation. Reformation is a renaissance which is directed towards reforms in society, changes. ठीक करना किसी चीज को रिफॉर्म कहते हैं कि नहीं? So it is basically a renaissance, something new, which is directed towards the reforms in society and also reforms in church. And this reformation was nothing but a religious movement during the middle period. They had both moral as well as intellectual phases. What happened, students, कि क्या था
कि जो सोसाइटी में करप्शन था वो एंटर कर चुका था यूरोपियन चर्चेस में. द करप्शन already had crept in the middle European churches, and this reformation is a step towards religious reform. और यही जो रेनेसा था, यही एक स्टेप आगे बढ़ा जिसने रिलीजियस को ठीक किया, रिलीजन को ठीक किया. एंड दिस मूवमेंट, इस पूरे मूवमेंट को क्या कहते हैं? कहते हैं प्रोटेस्टेंट मूवमेंट. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, यू कैन एटलीस्ट आंसर दिस क्वेश्चन नाउ इमीडिएटली. And it was a protest against the prevalent evils. Prevalent means जो पहले से evils चल रहे थे, which is to be found in the church as well as in the society. And it began in the later part of Henry VIII. Henry VIII के later part में ये reformation शुरू हुआ and continued through the reigns of Edward VI, जो उसका बेटा था, till the accession of Elizabeth. यहां से इसके आधे पार्ट से शुरू हुआ, came this wise and continued with Queen Elizabeth. So in short, we can say that Reformation was a great social, economical and religious movement which was an upheaval and shook the roots of the church. जिसने चर्च की रूट्स को हिला के रख दिया. Which shook the roots of the church, ended the domination of church. चर्च का जो डोमिनेशन था एक समय में उसको खत्म कर दिया. Destroyed the monasteries and transformed the people into free thinkers. अब हम उस जंजीरों से बाहर हो चुके थे. अब हम सोच सकते थे, अदरवाइज पहले हमारी सोच पे भी बेड़ियां लगी हुई थी. Understood what I am trying to teach you? Is it fine with you? Are you able to get all the points clear? Yes. So now we will discuss the causes of Reformation, which is also something of utter importance for you. कि रिफॉर्मेशन का कॉज क्या था? रिफॉर्मेशन तो हमने जान लिया, लेकिन क्या रीजन था? हर चीज किसी जो भी होती है उसके पीछे कोई रीजन होता है, तो रीजन जानना बहुत जरूरी होता है, स्पेसिफिकली फॉर समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. I think Jatin, I am using little bit Hindi also, but by the reason is कि many students of South India are also watching my lectures. So there are some students of South who cannot understand even single word of Hindi, but they are still managing it because हम उसका रूपांतर कर देते हैं. But too much Hindi I am not very comfortable with, but still I feel like wherever it is required I teach you in Hindi. So yes, so causes of Reformation. क्या causes थे? पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, किंग ने लड़ाई कर ली पोप से. राजा ने पोप से लड़ाई कर ली. एंड हेनरी एट, क्या रीजन था उसका? हेनरी एट, क्यों लड़ाई हम किसी से करते हैं? क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ होता है उसमें. यहां देखिएगा, बड़े मजेदार ड्रामेटिक स्टोरी है, फिल्म चल रही है. हेनरी एट को डाइवोर्स करना था अपनी पहली पत्नी को, और उसकी पहली पत्नी का नाम था क्वीन कैथरीन. और शादी किससे करना था? पत्नी से डिवोर्स करके किससे शादी करनी थी? नौकरानी से, मेड ऑफ ऑनर से, और उसका नाम था एने बॉयल. शायद आपने कभी पढ़ा भी हो. सो बिकॉज पोप वॉज अथॉरिटी एट दैट टाइम, और ये जो काम कर रहा था किंग, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था. सो व्हाट आई विल डू इफ आई एम अ किंग, आई वुड सबसे पहले मैं आपसे क्वारल करूंगा, जिससे हमारा आपका संबंध खत्म हो जाए, फिर मैं जो चाहूं करूं. So this was a strategy which was going on in his mind, and Henry VIII, because he wanted to divorce first wife Queen of Catherine and marry the maid of honor Anne Boyle, so the king's desire for a male heir and love for Anne Boyle were the causes of the quarrel with the Pope. Got my point? Clear? This is the first most important point of the causes of Reformation. The second point
इन द कॉज ऑफ रिफॉर्मेशन इज मार्टिन लूथर और उसकी टीचिंग्स। क्योंकि मार्टिन लूथर की जो टीचिंग्स थी दैट एक्चुअली रिजल्टेड इन अ रिलीजियस रिवोल्ट विच स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर थ्रू इंग्लैंड। आग लगा दिया। और कब हुआ था ये? 1517 में, 1517 में। तो ये एक दूसरा रीजन था। थर्ड रीजन इज दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ करप्शन in church and monastery. Why? Because they were using or misusing the immense wealth and power they had. Means the kings. मैंने आपको पहले बताया कि सब यही काम कर रहे थे, despotic rulers थे. And because this king used to be very powerful, despotic, and they used to spend like spendthrift, reckless spending. So what happened? Bankruptcy. बैंक खाली हो गया. And they were in dire need of money. Churches क्या हो गए? They basically became centers of evil and centers of corruptions. And the main object of reformation was to reform it. कोई चीज खराब हो गई है तो उसको हम ठीक करेंगे. कपड़ा फट गया है तो हम उसको सिलेंगे, रफू करेंगे. तो रिफॉर्मेशन का मतलब एक तरीके से हो गया रफू करना. So the main object of reformation was to reform it, and it looked after all the ill and the sick persons, and the human welfare was their ultimate motto. Ultimately उनका motto क्या था? Human welfare. And the bishop was appointed as head of many churches. और दिस लेड टू मेनी करप्शंस. और यही रीजन था कि वन बिशप जो अपॉइंट हुआ था वाज हेड ऑफ मेनी चर्चेस, सो ही बिकेम सो पावरफुल, एंड सो पावरफुल ऑटोमेटिक करप्शन. एंड द लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. क्या हुआ कि जो पोप था इसने क्या शुरू कर दिया? ही स्टार्टेड सेलिंग हाई एक्लेस्टिकल ऑफिसेस. बड़े बड़े ऑफिसेस को इसने बेचना शुरू कर दिया. एंड बेच करके वो जो पैसा आता था he used to take money and grant the pardon to sinners. मान लीजिए किसी ने कोई गलत काम किया या सिन है, उससे पैसा ले लिया, and there was no check to it. कितना खराब काम था ये. So these were the points which you have to remember. Now, what are the factors that brought reformation? Many reasons you can say जो कि reformation ले आया, जैसे कि abuses in the churches, hatred for the head of the church. चर्च का जो हेड था उसके लिए हमारे मन में हेट हो. And this all is spread of the new learning of Europe. Renaissance had already given a new outlook to the people, and there was now little room for blind faith. So क्या हुआ? Faith end हो गया and reason start हो गया. Reason means दिमाग. So what happened? ये जो movement था, this movement had received great impetus in the English people. English की जो monarchy थी या जो king था, उसने बहुत बार मना किया, अपोज किया the powers of Pope. The church organization was bitterly attacked by John Wycliffe, जो मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में. He was a professor of Oxford also, and he attacked the Christian doctrines too. He was very much against the Latin Bible in the church, and he was of the opinion that ordinary people cannot read Latin versions of the Bible. So 2/3 people of England became his followers. 1529 में पार्लियामेंट को बुलाया गया, और उस पार्लियामेंट को जो समन किया गया उसको कहते हैं रिफॉर्मेशन पार्लियामेंट, जो कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था. एंड दिस रेवोल्यूशन बेसिकली कर्टेल्ड द एंशिएंट प्रिविलेजेस ऑफ द क्लर्जीज, जो पहले ये मजा लूट रहे थे. एंड थॉमस क्रॉमवेल का आपने नाम सुना होगा. थॉमस क्रॉमवेल who was deeply influenced by Machiavelli's, और उसने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था द प्रिंस. He was greatly influenced by Machiavelli's The Prince. He was appointed, who? Thomas Cromwell, as Lord Chancellor in place of, पहले Lord Chancellor कौन था?
कार्डिनल वोल्से। अब लॉर्ड चांसलर कौन हो गया? थॉमस क्रोमवेल। एंड द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी डिक्लेयर्ड द किंग एज द सुप्रीम हेड ऑफ द इंग्लिश चर्च। देयर बाई क्या हुआ? द सुप्रीमेसी ऑफ पोप वॉज गॉन। सो 1536 से लेकर 1542 तक, 1536 टू 1542, रिलीजियस हाउसेस ऑफ इंग्लैंड वेर सप्रेस्ड, उनको दबा दिया गया। एंड देयर एबेज, द प्लॉट्स, द लैंड्स वेर ऑल टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड सोल्ड ऑफ। बहुत कम पैसा पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हुआ, और वो इस्तेमाल कहां होने लगा? किंग के इंटरेस्ट में। एंड जब किंग के इंटरेस्ट में ज्यादा पैसा लगने लगा और पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को नहीं लगने लगा, तो क्या हुआ? विच रिजल्टेड इन सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। ऑटोमेटिक, सही बात है, होना ही है। एंड दिस न्यू क्लास ऑफ रिच मर्चेंट्स, they were to dominate the English socio-cultural life for centuries to come now. Now, a very important thing is coming to you now, that is, इस रिफॉर्मेशन का, इस रिफॉर्म का कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी थे। एंड मेनी ऑफ द क्लासिकल स्कॉलर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई विल रब दी डिटेल्स बिकॉज आई हैव टू राइट मोर थिंग्स हियर। Many of the classical scholars, जैसे थॉमस मोर, और इनके साथ पोएट्स थे व्यात एंड सरे। दे स्टूड फॉर द रिफॉर्म ऑफ मेनी अब्यूजेस। इतनी सारी खराबियां थी, उसको हटाने के लिए खड़े हो गए, जो कि ऑलरेडी चर्चेस में क्रेप्ट कर चुके थे वो अब्यूजेस। एंड दीज पीपल ऑल्सो अपोज्ड द रूथलेस मेथड्स ऑफ क्रॉमवेल। क्रॉमवेल के जो रूथलेस मेथड्स थे उनको अपोज किया। एंड व्हेन पीपल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हेनरी एज द सुप्रीम हेड, कि नहीं भाई हम नहीं मानते कि मेरे हेड हैं, एंड डिनाइड हिज मैरिज विद एने बॉयलिन, दे वेयर beheaded. Such was the despotic temperament कि जिन्होंने मना किया गलत काम के लिए, उनका सर धड़ से अलग करा दिया। तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ despotism of these Tudor people. नाउ जो हेनरी का रिफॉर्मेशन था, मीन्स जो रिफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, इसने क्या किया? इसने चर्चेस को और मोनेस्ट्रीज को डिप्राइव कर दिया उनके पावर से, एंड रिफ्यूज्ड द अथॉरिटी ऑफ पोप। एंड व्हाट इट इज इन शॉर्ट, इट वाज बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ अपोजिशन टुवर्ड्स द क्लर्जीज। तो चेंज तो हो ही रहा था, चेंजेस हम देख ही रहे थे, इन नॉट ओनली इन द लिटरेरी स्फीयर बट ऑल्सो इन द रिलीजियस स्फीयर। इसी के बाद एक वर्क आया जिसका नाम है यूटोपिया, आपने पढ़ा ही होगा। देन मार्टिन लूथर का एक वर्क आया जिसका नाम था ट्रेटाइज। ट्रेटाइज में क्या था कि ये जो वर्क था लूथर का, ये बेसिकली एक फिलॉसफी बताता है विच अपोजेस द पावर ऑफ द पोप। जो पोप की पावर है उसको अपोज करता है, दैट इज द वर्क ट्रेटाइज। एंड मार्टिन लूथर का एक जर्मन ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल आया था, वो भी पब्लिश हुआ। नाउ
Next comes the name known as William Tyndale. The humanist, जिनको हम कहते हैं classical scholars, undoubtedly they were helping in the revival of learning, and William Tyndale, William Tyndale in English followed the footsteps of Martin Luther and produced a new version of the New Testament in English. New Testament in English. New Testament in English. And his English prose was characterized and was completed by, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पहले, कि इसका जो वर्जन था उसको बाद में किसने कंप्लीट किया, इसके प्रोज को, इंग्लिश प्रोज को, जो कि कैरेक्टराइज्ड हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत उसको निभाया है इसने. बट इट वाज कंप्लीटेड बाय, हु विल टेल मी, कैन एनीबॉडी टेल कि ये किसने कंप्लीट किया है, जिसको कहते हैं द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल 1611. हु हैज कंप्लीटेड इट, which is known as the authorized version of Bible? It has been completed by Vandana. It is not William Coverdale, it is Miles Coverdale. It is Miles, not Miles Coverdale. Now, the translation of the Bible was followed by a book of common prayer. इसका नाम है Book of Common Prayer. And this Book of Common Prayer was completed under the direction of the Archbishop Thomas Cranmer. Book of Common Prayer by Bishop Thomas Cranmer. Correct. Now, just to give you some information apart from this, I will write certain things here on the blackboard and you just give me the answer here or see whether you know it or not. टू लाइन्स को क्या कहते हैं, टू लाइन्स को कहते हैं, थ्री लाइन्स को क्या कहते हैं, फोर लाइन्स को क्या कहते हैं, who will tell me 5 lines? A poem of 5 lines is called. ना हम आपसे ये पूछ रहे थे, ना ये पूछ रहे थे, ना ये पूछ रहे थे, हम आपसे ये पूछ रहे थे. तो हमें शुरुआत तो यहां से करनी थी, इसलिए मैं आपसे यहां पे आके रुक गए हम कि व्हाट डू यू नो, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑफ दोज लाइन्स व्हिच आर 5 लाइन पोइट्री. 5 लाइन पोइट्री को क्या कहते हैं? फास्ट, नो, नो. limerick, I had explained you that day. What is limerick? Anybody in the class who can tell me that a poem of 5 lines is called? Should I give you the answer now, because we have limited time? Should I give you the answer of 5 lines or will you take some time? Should I give you an answer?
Okay, so the answer is cinquain, 5 line. So to continue with this, orally I will just tell you, not to waste time here. The 6 lines poem is called sestet. The 7 line poem is called rhyme royal. 8 line poem is called octave. 9 line is called alexandrine. And 10 line होती नहीं, 10.5 लाइन लेकिन होती है। 10.5 लाइन की कविता को क्या कहते हैं? 10.5, 10.5, 10.5, इसको क्या कहते हैं? ऐसी पोइट्री को क्या कहते हैं जिसमें 10.5 लाइन होती है? Yes, Shafina, you had told, you have given the answer cinquain, correct. Good that you were knowing about this. So who will tell me that a poem consisting of 10.5 lines? Vandana, no. Sprung rhythm is a different thing. वो तो एक टेक्निक है जीएम हॉपकिंस की। चलिए, चूंकि आपने स्प्रंग रिदम यहाँ पे टाइप किया है तो मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी चीज है। स्प्रंग रिदम क्या होता है जो जीएम हॉपकिंस ने इन्वेंट किया था, कि जैसे हम बच्चे छोटे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, जो वो नर्सरी में जाते हैं, सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इस तरह के नर्सरी राइम्स होती हैं जो टीचर्स, हम पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं, लिटिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और एक्शन से और आंखों से और बादल को दिखा करके और तारों को दिखा करके। So these little kids, they don't understand the meaning of those words. They understand the rhyming, which ultimately echoes in their ears, and they're able to spell it, and they're able to move actions with that words. Baba back sheep. So these nursery rhymes have that sprung rhythm. Could you understand? So this is called sprung rhythm, which was invented by G.M. Hopkins. यहाँ पे 10.5 लाइन की कविता को कहते हैं CURTAL, curtal sonnet. Now we come to the crash course. Now we come to finally the crash course. And remember that tomorrow I am going to take class from Renaissance onwards. So be prepared for the topic Renaissance. And just now I'll give you some questions in the crash course. Rest, I'm sure you must be preparing well and doing all your homework, because homework is very important. And always remember that this UGC NET exam is exam where you have to support yourself a lot by giving a lot of hours to it. For example, yes, my first question is that who has written Mr. H? Mr. H. Who has written Mr. H? And what is Mr. H? Any idea? It is a farce, F-A-R-C-E. It is a farce by Charles Lamb. Who has written a play, The Cup? The Cup, C-U-P. Who has written the play, The Cup? It is written by
Tennyson. And this play, written by Tennyson, is based on a story by Plutarch. Now, what is the name of that poem by Robert Browning which is based on a Florentine painter? एक फ्लोरेंटाइन पेंटर पे कौन सी ब्राउनिंग की पोएम बेस्ड है? It is Fra Lippo Lippi. It is Fra Lippo Lippi. It is written by Robert Browning based on a Florentine painter. Now, there is a collection of 51 poems by Browning. The collection of 51 poems by Browning is known as Men and Women. Men and Women, a very important work. It is a collection of 51 poems by Browning. What is the name of that poem which was written by Browning on the death of his wife? उसकी वाइफ के डेथ के बाद ब्राउनिंग ने एक पोएम लिखी है जो बहुत फेमस है और बहुत बार वो एग्जाम में आ चुकी है. That name of that poem is, no, it is wrong, Shabina. It is not My Last Duchess. It is One Word More. One Word More is a poem by Browning which was written on the death of his wife. Now, what is the name of that first published work by Browning, which is also a tribute to P.B. Shelley? A great work. First published work of Browning, and it is a tribute to Shelley. It is Pauline. Pauline. Pauline का जो पूरा नाम है, complete name is A Fragment of a Confession. A Fragment of a Confession. Fragment of a Confession. It is the first published book by Browning, and it is a tribute to Shelley. Now, The Ring and the Book. The Ring and the Book is based on, किसकी है Ring and the Book? The Ring and the Book, which is based on a murder trial, the murder of a young wife, Pompey, by her young and worthless husband. It is by, again, Robert Browning. Last question. God is in heaven and all is right in the world. Where you get these lines? God is in heaven and all is right in the world. ये किस पोएम की लाइंस हैं और किसने लिखी हैं? दो में से एक आंसर दे दीजिए या दोनों आंसर दे दीजिए. God is in heaven and all is right with the world. It is a line from Pippa Passes by no other than Robert Browning. And one more poem in the last, write it down in your diary. Patriot, Patriot. Again a poem by Browning where he describes a public hero who is Arnold of Brescia. Patriot is a poem by Browning जिसमें उसने डिस्क्राइब किया है एक पब्लिक हीरो को जो कि कौन है? ही इज द आर्नल्ड ऑफ ब्रेस्किया. Prescia. Brescia. So these are the questions. One question you can also write: who has written 7 Lamps of Architecture?
Seven Lamps of Architecture by John Ruskin. And so you can also work upon these details more, जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आप उसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, तो आपने 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर को गूगल पे डाला, कुछ उसमें से निकल के आया, जो अच्छा लगा आपने उसको 2 लाइन नोट कर लिया। तो इस तरीके से आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो आप लिख रहे हैं, वो मोर स्कॉलरली बन जाएगी आपके आगे के लिए। उससे मुझे याद आया जॉन रस्किन से ही, 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर से, कि जो रस्किन था उसी ने वो टर्म दिया था इंग्लिश लिटरेचर में जो बहुत फेमस है, और जिसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं पोइट्री को तो उसमें लगाते हैं कि वेयर इज पैथेटिक फेलिसी टू बी फाउंड, इमोशंस। सो दिस रस्किन ओनली गेव दिस टर्म पैथेटिक फेलिसी टू इंग्लिश लिटरेचर। सो स्टूडेंट्स, just do your work with proper concentration, proper hard work, and don't let your examination fail कि आपको ये फील हो कि हमने मेहनत कम की। हमारे एंड से हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपके अपने एंड से you give 100% to yourself. So meet you tomorrow and a very good evening to all of you. God bless you.